जीपी का थियरी बताएंगे ना, पहले तुम क्वेश्चन देके बोलो हुआ कि नहीं, उसके बाद मैं बोलूँ थियरी। थियरी किया नहीं, आई नो थियरी तो करना ही है। एक नहीं किया सर, क्वेश्चन नहीं किया सर। क्वेश्चन अभी लिखो, अभी मत लिखो क्वेश्चन, फर्स्ट लेट मी राइट द थियरी, देन यू विल गेट द दिस। पहले एक शॉर्ट दिस थिंग, आई गिव अ शॉर्ट डेफिनेशन। अभी कुछ मत लिखो, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, so write down the geographical position. I am writing a GP, you write full. The GP of a celestial body is that point where a straight line drawn from the center of the earth to the body meets the surface of the earth. ये है GP. That means, चलो तुम लोग को पूछा नहीं तो मैं जीपी का क्वेश्चन था, तुम लोग जो हल्ला करते सर ये नहीं वो नहीं वो नहीं। That means अगर स्टार इधर है, suppose let's draw the star there and let's draw the earth here. So a straight line drawn from the center of the earth to here, suppose it meets the surface of the earth here. So this would be the GP. Okay, na? Now we say, let us assume that equator इधर है. Nothing to observe, mind you. Equator इधर है. सर ये डायग्राम शुरू से बता दीजिए। डायग्राम कुछ नहीं है, ये डायग्राम अर्थ है, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। ये अर्थ है, this is the earth, that is the center of the earth. So now what is this? ये जो है, this would be equal to, अगर ये extend किया तो equinoctial हो गया. What is the arc of the meridian between the body and the equinoctial? Declination. Declination. What is the arc of the meridian between a point and the equator? Latitude, na? Latitude. Yes, sir. Latitude. Yes, sir. Correct. So both are same. So I can say that GP lat is equal to declination of body. It means you have to find out the declination, write that as GP lat. Now, suppose इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं. For the sake of explanation, let me move this. ये नहीं, ये सब उधर क्यों जा रहा है? इसको हटा दें. हाँ, ये आ गया, तो इसको भी इधर कर देंगे. इसको हटा दो. So now GP lat को डेफिनेशन मिल गया. Now ये भी हटा दो, ये भी हटा दो. Suppose I say that इसको अच्छे से बढ़िया से ड्रॉ करो. Suppose if this were Greenwich meridian, ठीक है ना, and this is the meridian of the body. So what would this be? What is the hour angle between the Greenwich meridian and meridian passing through the body? LHA. LHA. सर Between the Greenwich meridian. GHA. Correct. Body, वो तो body की है. But on the earth, what is the hour angle between the Greenwich meridian and the point and the meridian passing through the point? लॉन्गिट्यूड Longitude. In this case, longitude west. So I can say that
GP long is equal to longitude GHA of the body if less than 180. Why? Because more than 180 होने से क्या होगा, वो उससे जाएगा ना. If less than GP longitude west, because GHA westerly our angle, longitude also west, so GP directly equal to GHA directly equal to GP long. But east जाने में क्या है? Now suppose let us say here. Let me now remove this fellow and shift him here. कुछ हो नहीं चाहिए, इसको इधर है, इसको मैं इधर दे दिया. That means now I'm considering the star to be here, and I'm considering the straight line here from the center. अब ये स्टार है यहाँ से यहाँ. So now this was the Greenwich meridian. तो अभी क्या हो गया तुम्हारा? Now this becomes, what is this then? The same thing. This is the G, is the longitude west equal to GHA, correct? Okay. Now let me change it and say that GHA meridian वो नहीं, Greenwich meridian वो नहीं है. Greenwich meridian में shift कर रहा हूँ just to see what happens when it's longitude east. Suppose this is the Greenwich meridian. ये है Greenwich meridian. This is Greenwich meridian. Then on the earth, from the Greenwich meridian to the meridian passing through that point, what is known as? Longitude east. Longitude east, correct. East हाँ, but body का GHA कहाँ से आएगा? How is it? Westerly Measured like this, no? So that means this will be, this was longitude is 360 minus GHA, no? Got it? Yes, sir. Got Yes, it. sir. हाँ वही हम लोग GHA बोले, you can call EHA also. So you can say that GP longitude east is equal to 360 minus GHA if GHA is greater than 180, because then उस side में जाएगा ना. But the moment the GHA becomes greater than 180, it will go on the opposite side. So what we have to do, you have to find the GHA. If it is less than 180, it will be equal to longitude west. If it is more than 180, it will be equal to 360 minus GHA. That is all. Nothing to do with LHA. LHA से क्या है? LHA से हमको body का GHA मिल सकता है by subtracting or adding the longitude of the observer. Don't confuse longitude of the body. ठीक है ना? GHA से सर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अर्थ पे हम GHA से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेते हैं. Correct. All with Greenwich meridian, no? Yes, sir. Earth में Greenwich meridian है, celestial में GHA है. Both are projection of each other, ना? जो तुम Greenwich meridian प्रोजेक्ट करोगे celestial में, तुमको Greenwich meridian नहीं मिलेगा. उसमें तुम्हारे GHA meridian, GHA is measured westerly, longitude west is measured westerly, so both are equal. But GHA is measured westerly, longitude east is measured easterly, so longitude east is equal to 360 minus GHA. This is what it is. ओके सर, ओके. सर आपने क्या बोला कि बॉडी और ऑब्जर्वर का कंफ्यूज मत करना. माने ऑब्जर्वर का ये लॉन्गिट्यूड एंड योर बॉडी का लॉन्गिट्यूड आर डिफरेंट. दे नॉट इक्वल टू ऑब्जर्वर लॉन्गिट्यूड. माइंड, डोंट कंफ्यूज दैट. कभी कोई लिखता है ना जीपी लॉन्गिट्यूड, ऑब्जर्वर का लॉन्गिट्यूड लिख दिया, नॉट द ऑब्जर्वर लॉन्गिट्यूड. सो इन शॉर्ट, नाउ लेट मी सी व्हाट यू हैव टू डू. वी हैव टू, नंबर 1, find declination of body directly. Number 1 is very easy. कैसे भी फाइंड करो, by Napier's rule या by nautical almanac दिया हुआ, whatever it is, that is equal to GP lat. GP lat. Number 2, find GHA of body. GHA body मिल गया. So I will tell you how to find GHA of the body. If
less than, okay, directly symbol देगा. If GHA is less than 180, then less than 180, then longitude is equal to, then it is longitude west. West. Yeah, equal to longitude west. And automatically it follows if it's more than 180 is longitude east. 360 minus GHA is longitude east. West. And if greater than 180, that is GHA, if GHA, then 360 minus GHA is equal to to longitude. longitude east. Correct. That's all. सर ये जो पहला पार्ट है हाँ. डेक्लिनेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू जीपी लैट, उसमें हाँ. कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट सर जो डायरेक्ट डेक्लिन जो मिला वो डायरेक्ट जीपी लैट हो गया. नॉर्थ साउथ जो भी मिला है इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूड ईस्ट, इक्वल टू लॉन्गिट्यूड ईस्ट. ये हो गया तुम्हारा. सो नाउ हाउ विल यू फाइंड जीएचए? फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन इसमें तो ये नहीं दिया है, इसमें तो टाइम नहीं है. सो व्हाट यू डू? सर एलएचए फाइंड करेंगे by PZX triangle. Correct. Find LHA, that is P na, P is equal to LHA 360 minus LHA जो भी है, by PZX triangle. Apply longitude of observer, mind you, of observer to LHA to get GHA star, and then decide whether it is equal to or 360 minus, and find GHA longitude and find GP longitude. That's all. Simple. Now that you got the concept, let us go and do this problem. Any doubt in this? Anybody? Concept में doubt हो तो अभी पूछो. एक बार LHA वाला बता दीजिए. LHA तुमको PZ triangle में मिलेगा ना? Yes sir. LHA is what? GHA plus minus longitude. तुमको longitude मालूम है 00022, तुमको GHA मिल गया. GHA तुमको longitude of body में GP long मिलेगा. If it is less than 180 direct, if it is more than 180 360 minus GHA. Just PZX angle का triangle सर, वो तो बेसिक उससे लगा सकते हैं बस. PZ triangle, correct. That's it. Always PZ triangle. सर Now, हाँ बोलो. तथा रेशनल हॉराइजन का डायग्राम में बता दीजिए वो एलएचए का. राशि और रीजन का डायग्राम बनाएगा ना. We'll do this question. No, ये क्वेश्चन का तो सब मिल जाएगा. एक बार तुमको फंडा क्लियर हो गया, अभी ये क्वेश्चन जब करेंगे ये सब मिल जाएगा. Now what it says? Now when we draw, हाँ बोलो. लिख लेते हैं सर पहले. दिख रहा है? नहीं सर लिख लेते हैं ना पहले. देखो डायग्राम में लिखो, नो प्रॉब्लम. Let me know when we can start again. हो गया? हो गया सर. Okay. Now let me delete all this. First is to draw the diagram. As you know, anything with PON सर कौन सा स्टार तो नहीं बोला है. नहीं चाहिए. Why do you want star? कौन सा? तुमको almanac थोड़ी कर, तुमको कैलकुलेट करना होगा ना. You don't have to take from the almanac. अभी ये है तुम्हारा rational horizon.
ये है तुम्हारा प्रिंसिपल वर्टिकल, ये है तुम्हारा प्राइम वर्टिकल, and first and foremost is label all of them, otherwise it will be incomplete. North, south, east, west. यहाँ सेंटर में क्या लिखना है? Z. 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 Now the true azimuth is 210, so I can say that 210 इधर रहेगा. Are you agree with the line that I've drawn? South 30 west Yes, ना, sir. 210 तो इधर रहेगा. अच्छा, true altitude 59. अगर true altitude 59 है, I can place it as here. इधर रहेगा 59. True altitude ज्यादा है ना, तो इधर रहेगा. ये पोजीशन ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Now, since the observer is at the equator, the entire thing will be a straight line. The declination circle will be a straight line because declination circle will be always equal to the parallel to the equator. So ये हो गया declination circle. Because pole is here. ये equator है, so pole is also the pole. This is the pole. So I have my PZX triangle like this. This become my PZX triangle. From where I ये can जो find. हाँ बोलो. सर ये जो आपने ट्रू ऑल्टीट्यूड ये इस पे दिखाया एक्स पोजीशन, वो कैसे दिखाया सर? Because it is 59, no? तो मतलब 50 मतलब ये ज्यादा रहेगा ना, ये 60 हो गया ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, ये 30 हो गया, तो ये कम हो गया और वो ज्यादा हो गया ना. 59 21 आई एम सेइंग दैट दिस इज मोर एंड टू बी लेस. नो, अगर Okay, बोलता कि 45 है देन आई पुट इट सेंटर में डालता. अगर बोलता ट्रू ऑल्टी 80 है तो मैं इधर डालता. अगर बोलता ट्रू ऑल्टी 20 है तो मैं इधर डालता. अंडरस्टूड? सर यस दैट व्हाट इट इज. So now I got the PZS triangle where PZ is the, what is the PZ? Quadrantal. Quadrantal, correct. And PX will be equal to 90 plus because P to here is 90 degree and we PX with 90 plus declination. So now I draw my Napier circle and find out both angle P and PX. And I divide the Napier circle into two parts. Divide the top into one part again, divide this into three parts, and there I am ready to go. तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया एंगल P, देखो ये 90 डिग्री है ना, तो ये P हो गया, ये P हो गया, ये क्या हो गया, ये Z हो गया ना. हाउ मच वुड Z बी? Z is this angle. I know that this is 210, so it will be 360 minus 210, no? ये हो गया 90 minus opposite to Z is PX. And this is 90 minus opposite to P is Z. No, opposite to ZX. Z. ZX. Yeah, ZX. And this would be opposite to the right angle. Opposite to Z क्या है? अच्छा X हो गया. Opposite to the quadrantal is Z. ये है X minus 90, which is meaningless. It's meaningless. It's got no meaning. ये हो गया now. So now what I want? What I know now, I know Z, I know ZX, and I want declination. So in this case, we not sin 90. हाँ ठीक है. So I can say that sin 90 minus px is equal to cos z cos 90 minus zx. ये हो गया.
equal to sine 90 minus px is, so I can find out cos px. cos px, yeah. Cos px equal to cos z कितना है, एंगल z, इनर एंगल 360 minus 210. करेक्ट, तो कितना हुआ 150 ना, 150. 150 into cos 90 minus zx, 90 minus zx कितना आया 30 degree 36 minutes, 30 degree 36. Therefore I can get px is equal to, अभी देखो px में, let me get me calculate, meanwhile you all calculate. कितना मिला px, सर zx की वैल्यू 59 डिग्री 24 मिनट्स. नहीं नहीं, how the altitude is 59.24, तो 90 6 90 minus no, तो सिर्फ फिर ये जब cos 90 माइनस 30 zx किया तो वो 30 डिग्री 36 मिनट कैसे आया? कहाँ 30 डिग्री, ये 90 minus 59.24 ना, तो वो 90 ट्रू minus, ऑल्टीट्यूड है ना सर? तो ट्रू 90 minus true altitude zx ना, ओके सर. 138 डिग्री 11.7 में मिला कि नहीं, so px is equal to 90 plus declination in this case, सर therefore थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर. ये आप ऊपर 90 माइनस zx इक्वल टू ट्रू ऑल्टीट्यूड, ट्रू ऑल्टीट्यूड की वैल्यू. हाँ, I got it, correct, my mistake, एक मिनट, तो यहाँ पे वो नहीं होगा, तो ये फिगर थोड़ा चेंज होगा, तो मुझे डिलीट दिस, साइन कर दीजिए सर cos को. हाँ करेक्ट, वही मैं अभी किया था, आपने बोला तो मैं. या ये साइन रहेगा, नॉट कॉस, साइन. So you get cos 150 into sine 30 degree 36 minute equal to inverse cos answer 116 9.5, correct. You must tell, something is wrong, you must tell, even though you don't think that I cannot be wrong, always can be possible. 116 degree 9.5, 116 degree 09. इसमें एक और ऐड करना है, px is equal to px, and in this case px is equal to 90 plus declination. Why? Because pole to equator is 90 degree. No, ये तो equator हो गया ना actually, because observer latitude is 0 0. So we can say that it will be, so ये plus. So we can say declination, therefore declination is equal to 26 degree 9.5 south. correct, 26 degree 09.5 south. ये हो गया एक, one option is done. So GP lat is equal to GP lat. We can say here is equal to, एंड सर एक और चीज, ये हमने मतलब बॉडी को पैरेलल इक्वेटर पे कैसे ले लिया सर? because latitude is 0, no? So that is equator. Whenever the latitude is 0, because the declination circle is always parallel to the equator, na? Or the equinoctial. यस सर. That is why, see, when I draw, suppose I show you, when I draw like this, I always tell you, no, it should be, जब equinoctial इधर है, suppose ऐसा है, so declination circle is always parallel to that, no? ऐसे ही होगा ना, correct? यस. Same way, जब ये इधर ही है, जब इधर ही है, then the declination will be
parallel. Declination circle parallel. That is what. ठीक है ना? That way, because you are at the equator, declination circle is the parallel. Okay, now we find this one. Now इसको भूल जाओ. 19 px भूल जाओ. P, Z and this. So putting that, I can find that sine middle part is equal to tan P into tan 90 minus Z. 90 minus ZX. So somebody talking, please mute. So tan P is equal to sin Z. Sin Z कितना है? 150 है Z. 150 divided by tan 90 में Z altitude. So 59, 24. Therefore P is equal to. अभी देखो कितना आता है. Sorry, yes, हाँ correct. Sin 150 divided by tan 59 degree 24 minutes is equal to inverse tan answer. कितना मिला? 1628.4 मिला कि नहीं? Correct? Yes, sir. 16 degree 28.5. Correct. Now would P be equal to LHA or 360 minus A? Who can tell me this? Sir, P equal to LHC. Why? Why? West में है sir. Huh? Body is in Less than west. 180, sir. Less than 180. No, less than 180. LHA मालूम नहीं ना. सर लॉन्जिट्यूड वेस्ट है. No, longitude वैसे नहीं होगा. Since azimuth is 210, body is west of observer, and P is equal to LHA. That's all. 210 मिला मतलब body west हो गया ना. And P is equal to LHA. P is equal to LHA. ये पार्ट एक बार बता दीजिए. अजीमत कितना है? 210 है. तो ईस्ट मतलब इस साइड में ना. डायग्राम से पता चलता है ना कि वेस्ट में है, बिकॉज अजीमत इज 210. फ्रॉम द डायग्राम आल्सो यू कैन गेट, बट यू हैव टू से मोर फैक्चुअली. अजीमत 210 मींस बॉडी इज वेस्ट ऑफ ऑब्जर्वर. नो, ऑब्जर्वर तो इधर है ना. ऑब्जर्वर इज एट जेड. नो, ठीक है ना? कोई शक? ये डायग्राम नहीं समझ में आया सर. अभी तुम सब करने के बाद बोलते डायग्राम नहीं समझ में आया. पहले बोलना चाहिए ना. मतलब सॉल्यूशन समझ में आ गया, डायग्राम बता दीजिए. अरे ये रैशनल होराइजन है, ये प्रिंसिपल वर्टिकल है, ये प्राइम वर्टिकल है. स्टार इज लैटिट्यूड इज 000. So this is the equator itself. WZ is also the equator or the equinox. ठीक है सर. The star is bearing 210, तो 210 का लाइन लिया. The 210 में, so star is somewhere on this line. लेकिन उसका ऑल्टीट्यूड 59 है, तो ये 59 है वो तो छोटा, तो इट बी मोर दिस साइड एंड लेस दिस साइड. नो, तो ये 30 है तो ये 59 है, तो उधर है. एंड द डिक्लिनेशन सर्कल विल बी पैरेलल टू द इक्विनॉक्शियल बिकॉज़ लैटिट्यूड इज 0. दैट इज व्हाई so parallel line on the stationary horizon. So whenever the latitude is 0, the declining circles will always be parallel to the will be straight lines. ठीक है ना? Got it? सर Now we come to the last part. That मतलब is, इस वाले डायग्राम में WZE और WQE एक ही लाइन पे होगा सर. हाँ correct. ये QES, it's Q only, no? Because the PZ is 90, na? सर So we say in this case LHA is equal to 16 degrees 28.4 minutes. Longitude west is equal to 22 degree. Therefore GHA is equal to longitude west, GHA best, no? Best. Yes, sir. 38.28.4. 03828. Since it is less than 180, it will be equal to the
GP long. Therefore, we can say GP long is equal to 38 degree, 28.4 west. That's all. Because GHL less than 180, so it is west. सर ऐसे फिगर से तो पता चलता है कि वेस्ट में ही है. फिगर में GP लॉन्ग से पता नहीं चलता है. फिगर से पता चलता है खाली द बॉडी इज वेस्ट, बट ग्रीन भी फिगर में नहीं है ना, वो तो वो कैलकुलेशन से मिलेगा. That longitude west GHA best and GHA less than 180 means GHA is equal to GP long. That initially I say don't confuse with the longitude. ये अलग बात है. ये जो है ये तुमको to find the GHA of the body मिला, but यहाँ से मिला whether it is east or west. Less than 180 means longitude is west, more than 180 means longitude is east. सर इसमें इसलिए स्टार्टिंग में हुआ क्योंकि वो Q और Z एक ही पोजीशन पे एक ही जगह पे लाई करते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा था पहले. हाँ, तो इधर में Q also would be here. सर ये जीपी लॉन्ग का जो आपने एक्सप्लेनेशन बताया कि जीएचए 180 डिग्री का इस वजह से वेस्ट लिखा है ना हम लोगों ने. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो तो मैं लिखा ना, डेफिनेशन नहीं लिख दिया. ठीक है ना. सर ये px 90 प्लस डेक्लिनेशन कैसे होगा सर, एक बार ये बताओ. बिकॉज पोल टू इक्वेटर 90 डिग्री हो गया ना. पोल तो एकदम इधर में है ना. पोल तो तुम्हारा एकदम 90 डिग्री है ना. तो पोल टू इक्वेटर बिकॉज लैटिट्यूड इज 90 डिग्री ना. लैटिट्यूड 0 0. सो व्हाट इज पीजेड? पीजेड बिकम 90 ना. और सर ऊपर ही क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं लिया? कौन सा ऊपर लिया? मतलब नॉर्थ की तरफ पोल ही लिया, नीचे भी तो ले सकते थे. नीचे में ले सकता है, बट ये 0 0 नॉर्थ दिया ना. ओके, तो ये इसके स्टार का निकालना तो एसएचए वगैरह नहीं कुछ लगाएंगे? हाँ, सर वो पोल हम सिर्फ अपने लैटिट्यूड के हिसाब से लेंगे, अगर नॉर्थ में होगा तो नॉर्थ की हाँ, तरफ. करेक्ट 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 करेक्ट. ठीक है ना. मैंने नॉर्मल मैं वाले कह रहा हूँ सर डायग्राम अभी से तुम पोल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. इवन इफ यू डू पोल हियर यू विल गेट अनदर आंसर. यू गेट लाइक दिस. ठीक है ना. आंसर विल बी द सेम, बट ओनली थिंग इधर यहाँ पे तुम्हारा कंफ्यूजन होगा ज्यादा. बट सीधा नॉर्थ लिया जब, सीधा यहीं पे ले लो. दैट इज सिंपल थिंग. ठीक है ना. सर एसएचए वगैरह नहीं लगेगा स्टार के ऐसे लिए? जब पूछा नहीं ना, पूछा ऐसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? ऑलवेज रिमेंबर टू अ लॉयर एंड टू अ teacher, always give minimum information. Examiner, give minimum information. To the doctor and to the stockbroker, give maximum information. नहीं तो वो स्टॉक ब्रोकर तुम्हारी चड्डी खोल देगा, तुमको कुछ और स्टॉक खरीदने को बोलेगा. बट लॉयर को और एग्जामिनर को मिनिमम इन्फॉर्मेशन देने की, ज्यादा नहीं बोलने की. सर एक बार ये क्वेश्चन सर 20 नॉर्थ या फिर किसी एक नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड में करके दिखा और दीजिए. मिलेगा ना. डायग्राम बस. और एक क्वेश्चन डायग्राम क्यों, मैं एक और क्वेश्चन करूंगा ना. अभी तुम लोग मेरे कब्जे में हो, कहीं नहीं जा सकते हो. अभी बहुत दिन बाद ऐसा एक क्लास मिला कि तुमको मैं 8 बजे तक पकड़ सकता हूँ. सब सर मिलेगा. कल एग्जाम है सर. मेरा एग्जाम है ना. डोंट वरी, आई गिव यू 5 मार्क्स ग्रेस फॉर एवरीवन. बच्चे मर जाएंगे सर. सबको मैं 5 मार्क्स एक्स्ट्रा. ऑल विल पास, आई एम टेलिंग यू. तुम लोग सोच रहे हैं कि ये है वो है, बट द सब्जेक्ट इज सच एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ माई टीचिंग एंड क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ योर learning abilities. Very much. You all are very alert guys. सब मिलेगा, डोंट वरी. अभी मैं बताता दूसरा वाला. सर आप पानी पे चढ़ा रहे हो. नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं है. मैं फैक्ट बोल रहा हूँ. The subject, if I can make it interesting to you and you can understand. अगर I made in a boring way, no, तुम लोग सब ऐसे सो जाते हैं. But the fact that I can make out, no, from your interaction, I can make out that you all are going to pass. Don't worry. अभी मैं क्वेश्चन खोज रहा हूँ. अभी और भी तो बहुत बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बाकी है. अभी हम लोग तो खाली वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस. सर लास्ट में कहीं खिचड़ी ना हो जाए सर. कुछ नहीं होगा. मैं हूं ना. एवरीबॉडी विल पास. सर अभी वो वाला डायग्राम करके प्रैक्टिस हो गई थी, इसमें कंफ्यूजन हो गया था अचानक. कोई कंफ्यूजन नहीं है. कंफ्यूजन तो मैं हूं ना. क्या बात है. लेटर ऑन आल्सो वी कैन प्ले कंफ्यूजन, नो. आई एम जस्ट गेटिंग वन मोर क्वेश्चन ऑन जीपी. हाँ, ये आ गया ना. जय सेम है. बहुत खोजने के बाद एक क्वेश्चन मिला है, सेम क्वेश्चन. हाँ, या कैलकुलेट जीपी. यस.
Exactly what you wanted, same thing has come. Find the GP of the body. Wow, this is a beautiful question because फुल मार्क का कड़का मार क्वेश्चन है, मतलब व्हाट कड़का मार क्वेश्चन. अगर कर पाया तो तुम बना सिकंदर, नहीं कर पाया तो बना क्या? अंदर बंदर. तो सर कल यही क्वेश्चन आएगा. डोंट नो. ये क्वेश्चन लिखो. तो अगर तुमको बंदर बनना है कि सिकंदर बनना है, अप टू यू. सिमिलर क्वेश्चन है ये, बट इसमें एक और लोचा है कि वो प्राइम वर्टिकल में दे दिया. अच्छा, ये 022 है, 0220 नहीं. क्वेश्चन लिख ले तो बोल दो, देन विल ड्रॉ द डायग्राम. ऑलवेज व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम, नो योर कांसेप्ट विल बी वेरी क्लियर. इसमें क्या बेयरिंग नहीं दिया हुआ है, बट क्या दिया हुआ है? प्राइम वर्टिकल दिया हुआ है. सो स्ट्रेट अवे यू गॉट द बेयरिंग ओनली, नो. सर ये हमेशा इसकी लिखा बेयरिंग रहता है. सर 270 हो गई सर. कौन सा? ट्रू एजिमुथ 270 हो जाएगा सर इसमें. करेक्ट. So we can place it. Plus prime vertical problem, तुम्हारा 90 डिग्री मिल गया. Idea is that जिधर 90 डिग्री मिला, you can do Napier's rule, become very easy. वहां पे PZ was 90, so it became quadrantal. Here angle Z is 90, so it become right angle. So now let us draw. The idea is to always if you get the diagram correct, मतलब तुम्हारा लॉजिक पूरा क्लियर हो जाएगा. सर मार्च 20 का क्वेश्चन है. हाँ मार्च 2020. हाँ, देखा इसको बराबर. मुझे आंसर नहीं मालूम है, बल्कि कब आया वो मालूम है उसको. आंसर ही मालूम है सर. नहीं, वो कुछ मालूम नहीं है उसको. कहाँ से कैसा करना है वो भी मालूम नहीं. He will exactly tell you which month, which year it came, how many people passed, how many people failed, वो सब बताएगा वो बराबर. ये तो मेरा पुराना पापी है ना, ये मेरे को मालूम है इसका. तो फर्स्ट शॉट में क्लियर कर. क्लास में बहुत डाउट क्लियर पूछेगा, सब बोलेगा इसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट शॉट पे सब क्लियर करके निकल जाए. ये लो. लास्ट टू लास्ट मंथ का सर मैं पेपर देखा था, केवल कोलकाता से 2 लड़के फेल हुए थे और कहीं से नहीं सर. और बाकी सब जगह पास हो गया. यस सर. ऐसे कैसे? पता नहीं सर. कॉस्मा कोलकाता से? नहीं सर, मतलब कोलकाता से जो अपीयर हुए थे, पता नहीं ऐसा ही कुछ था, तो कोलकाता का उसमें लिखा था 2 बच्चे फेल. बाकी एवरीबडी पास. यस सर. हाउ कैन दैट बी? आई हैव टू चेक. आई डोंट बिलीव योर झूठ बोल रहे थे. क्या बुलशिट मार रहा है सारा. सर मैं ये नहीं कह रहा सर कि फोस्मा से वो लड़के थे, उन्होंने कोलकाता से एग्जाम दिया था. अच्छा, देखना पड़ेगा. नो, अभी कोलकाता में तो वो 2-3 चैंपियन इंस्टीट्यूट है ना, हून और वो अपना ये क्या है वो सीएक्स पढ़ाई वढ़ाई कुछ होता नहीं है. क्या बोले, फैकल्टी भी नहीं है. ओके, ट्रू अल्टीट्यूड बॉडी ऑन द प्राइम वर्टिकल इज 34-31. सो द बॉडी विल बी हियर, इधर रहेगा. तो यहाँ पे अल्टीट्यूड कम है, ZX ज्यादा है, एंड P होगा इधर. दिस डायग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट डायग्राम. P इधर आ गया. आफ्टर द वर्किंग आउट इज एग्जैक्टली द सेम. ये आ गया, ये आ गया. डायग्राम समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया? सो द डिक्लेरेशन सर्कल वुड बी लाइक दिस. सर ये जीपी वाले में हमेशा दिया रहता है क्या, कैलकुलेट जीपी? हाँ, obviously. So now we draw the Napier's circle. चलिए डायग्राम फिर से एक बार बता दीजिए. डायग्राम है तुम्हारा, रैशनल होराइजन लगा दिया, प्रिंसिपल वर्टिकल प्राइम वर्टिकल कर दिया, तुम्हारा x ड्रॉ किया, बिकॉज WX is 34, ZX would be 56 more. तो ये ZX भी ज्यादा. That is how you are getting the concept clear, you know. Then x मिल गया, p मिल गया, because Pn is equal to latitude, तो p मिल गया, और यहाँ पे तुम्हारा ये मिल गया. अच्छा सर्कल ड्रॉ किया, हो गया. सर मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में q जो है z पे शिफ्ट हो गया था, तो p n पे शिफ्ट हो गया. करेक्ट. यहाँ पे करेक्ट एब्सोल्युटली, बिकॉज PQ इज ऑलवेज 90 ना. ये Q है, PQ इज 90. दैट इज वाई जब Q यहाँ Z पे आ गया तो P पूरा N पे जाएगा. ओके. नाउ लेट अस डू वन मोर बाय Napier's rule.
अच्छा अभी ये हो गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो गया तुम्हारा PZ, ये हो गया ZX, ये हो गया ZX का ऑपोजिट है P, 90 माइनस P, 90 माइनस P, ये हो गया PZ का ऑपोजिट है X, 90 माइनस X, यहाँ पे हो गया 90 minus px. So now what do you want? First you want the latitude, the declination. So you want the declination, you have pz, you have zx. So straight away you can say that sine 90 minus px is equal to cos pz into cos zx. Or I can say 90 minus p is the declination only. Sine declination is equal to cos pz कितना है 43 डिग्री 55 minutes into cos z कितना altitude से करो 50 55 29 29 minutes. Therefore declination is equal to cos 43 degree 55 minutes cos 55 degree 29 minutes inverse sine answer is equal to 24 5.5 मिला yes sir 5.4 5.4 5.4 24 degree 05.4 minutes north सर pz की वैल्यू कैसे है सर? 90 minute declination or 90 minute latitude ओके is equal to GP lat. सर एक डाउट था सर। सर ये जो PZ है ये 90 माइनस लैटिट्यूड है, ये करेक्ट जो PX होगा ये 90 माइनस डिक्लिनेशन होगा फिर। करेक्ट वही तो है। तो ठीक, 90 ठीक। माइनस PX तो डिक्लेरेशन ही हो गया ना। So now we find P now using original. Don't use what you have found. PX को use मत करो because अब वहां जाएगा यहाँ गड़बड़ हो गया तुम्हारा वहां भी गलत हो जाएगा. So here you have sin PZ is equal to cos ZX into cos 90 minus P. Therefore, cos 90 minus P sin P, no? Sin P is equal to sin PZ. सर PZ. ये tan का होगा सर, एडजेसेंट है। Ah, sorry, correct. Tan. जैसे ही बोला मेरे को I realized it should be tan. वो लिखते लिखते mechanically tan into tan. So you have sin P is equal to tan. ZX you already know 55/29 into tan divided by ये गड़बड़ हो गया। So tan 90 minus P is sin P. हाँ tan 9 ये नहीं सब गड़बड़ है। tan ठीक है सर, tan ZX P equal to sin PZ by tan ZX. correct. Sin PZ you already know the value 43.55 divided by tan ZX you already know the value 55.29. So therefore you can get 90 minus P. So 90 minus P is equal to 90 minus P is equal to अभी देखो sin 43 degree 55 minutes divided by tan 55 degree 29 minutes is equal to inverse tan answer. कितना मिला? 64 degree 29.9. हाँ
25 डिग्री 30 पॉइंट 25 सर 30 टोटल मैं पी का वैल्यू बता रहा था। नहीं, वो तो पी ऐड होगा ना। हाँ, पी का वैल्यू होगा 30.1। अच्छा, स्किप करके बोल रहा हूँ। तो पी इधर प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो 64 डिग्री 29.9, करेक्ट? 0.9 यस सर Okay, here again is equal to LHA. So we can say is equal to LHA since body वेस्ट is west of observer. सर ये तो डायग्राम से ही पता चल जाता है सर, लिखने की हाँ जरूरत हाँ, ये नहीं, एक लिख दो लाइन, तो बहुत खड़ूस लोग है जो बोलेगा अरे कैसे मिला, ये वो है। So now you get longitude is equal to longitude. Don't give chance for people to cut your marks, you know. That is west is equal to 22 degree 20 minutes. Longitude where GHA best, so again you have to add. So GHA would be equal to 22 plus 64. So 86 again, na? 86 49.9 is equal to longitude east, because is equal to longitude east or west. वेस्ट Correct. Is equal to longitude west is equal to GP longitude west. GP longitude west. Since GHA less than 180. That's all. हो गया, कहानी खत्म। 30 मार्क्स इन पॉकेट, हंसते हंसते जाओ, मजा करो, हो गया। है सर। थैंक यू सर। सर एक कौन चीज बोला थैंक यू? अभी अभी तो थैंक यू का टाइम हुआ नहीं है। ये सर विकास को और बोलो, किसका डाउट है? ये इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ये pzx मतलब ये नेपियर बनाएंगे तो इसमें px और p निकालना है, बस दो चीज। करेक्ट करेक्ट। पी नहीं, इसमें निकालना है पी एक्स फॉर डिक्लिनेशन एंड एंगल पी फॉर एल एच ए, दैट्स ऑल। एंगल पी से एल एच ए निकालो, एल एच ए से जी एच ए निकालो, जी एच ए लेस देन 180 लॉन्गिट्यूड वेस्ट, जी एच ए मोर देन 180 लॉन्गिट्यूड ईस्ट, कहानी खत्म। ओके सर। So you do other now for tomorrow. One question will come on GP, which other than what I've done now. तो तुमको क्वेश्चन बैंक में देखना पड़ेगा क्या क्या है। So सर पर आपने तो बोला था कि जो क्लास में कराया उसी में से आएगा। नहीं नहीं, उसी जैसे आएगा, मैं से उसी में से नहीं बोला, वो तुम्हारा जैसे तुम्हारा में से हो गया। ग्रामेटिकल मिस्टेक है सर इसकी। नहीं नहीं, वो कान में थोड़ा कम सुनते हो बेचारा, वो ऑनलाइन करके हेडफोन लगा लगा के म्यूजिक सुन सुन के उसके कान में थोड़ा कम सुनता है। वो ऐसे जैसे आएगा वो बेचारा सोचा में से है। अब क्लियर हो गया ना? सर आपने